हेलो एंड वेलकम। आज गुजरात सेट एग्जामिनेशन 2025 का पेपर 1 सेट ए सॉल्व करने वाले हैं और 2023 से 2025 तक का जितने भी जी सेट एग्जामिनेशन पेपर 1 पेपर 2 कॉमर्स मैनेजमेंट इकोनॉमिक्स के हुए वो सारे सॉल्व करके अपलोड करने वाला हूँ। सो स्टे ट्यून्ड। लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1 पेपर 1। Which of the following is an example of synchronous communication in ICT, information communication technology? सिंक्रोनमस मीन्स रियल टाइम कम्युनिकेशन कौन सा है? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ईमेल, लॉग और विकीपीडिया, विकीज। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। रियल टाइम कम्युनिकेशन मीन्स दोनों पार्टी सामने सामने एक दूसरे से रियल टाइम में ऑन द स्पॉट मैसेज एक्सचेंज कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। सो ऑप्शन 1 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, हु इज नोन एज द इन्वेंटर ऑफ एआई? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इन्वेंटर कौन है? चार्ल्स बेबेज? नो, ही इज एन इन्वेंटर ऑफ कंप्यूटर। जॉन मैककार्थी इज करेक्ट आंसर। 1956 में उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टर्म कॉइन किया था। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पेयर ऑफ स्वयं प्रभा डीटीएच चैनल एंड इट्स थीम और सब्जेक्ट। चैनल 1 वर्गिश, लैंग्वेज एंड लिटरेचर, करेक्ट। चैनल 3 प्रबोध, social and behavioral science, correct. Channel 6 Vidhi, law, legal studies and human rights, correct. Channel 10 Dux for life science, no. D is option correct answer. It is incorrect pair because Daksh is for teacher education and channel 12 G1 is for life science. So option D is correct answer. Next, which of the following softwares are used in India for plagiarism checking? Turnitin, Drillbit, Urkund. Correct answer is all of the above. 1, 2, 3, all are correct. So option D is correct answer. Next, put the following units of storage into correct order, starting with the largest unit first, going down to the smallest. Kilobyte, byte, megabyte, terabyte, gigabyte, and bit. So TB, terabyte is first, then GB, then megabyte, kilobyte, byte, and bit. So correct sequence is 4, 5, 3, 1, 2, 6. 4, 5, 3, 1, 2, 6. Option A is correct answer. So question number 1 to 5 ICT के related था. Next question number 6 to 10 communication के related है. The encoding of communication message which takes into consideration the circumstances and environment refers to decoding, channel, context, response. Option C is correct answer. Context. Context shapes how the message is delivered. Next, two students who stand apart from each other maintaining their territorial boundaries refers to haptics, kinesics, proxemics, or chronemics. So haptics means communication through touch. Kinesics means uh, body language or posture, gesture, etc. Proxemics is correct answer. दोनों पार्टीज को स्पेस और डिस्टेंस कितना रखना है वो प्रोक्सेमिक्स में कवर होता है. एंड क्रोनेमिक्स मीन्स यूज ऑफ टाइम इन कम्युनिकेशन. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, द टीचर्स गिव रेगुलर फीडबैक टू their institutional heads on student performance through dash of communication. Upward channel, horizontal, downward or lateral channel. So teacher is a subordinate and institutional heads are the superior. So subordinate superior को फीडबैक देगा, दैट इज अपवर्ड चैनल. हॉरिजॉन्टल मीन्स सेम लेवल ऑफ कम्युनिकेशन. डाउनवर्ड मीन्स सुपीरियर सबॉर्डिनेट को ऑर्डर्स पास करते हैं और लेटरली सिमिलर टू हॉरिजॉन्टल. तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, perception barrier in communication occurs because people perceive the same phenomena from different frame of reference. Option A is correct answer. Perception barrier means when different people interpret the same message differently. It can be due to different background or culture, values and experience, etc. So option A is correct answer. Next, yellow journalism is development journalism, print journalism, investigative or tabloid journalism. So yellow journalism means
Developmental journalism, no. Developmental journalism focuses on developmental issues. Print journalism is a medium, not a style of journalism. Investigative journalism identifies uh, the facts. So it is also not an answer. Tabloid journalism is correct answer. It means when news are delivered with exaggerated message. So to attract readers. So yeah, tabloid journalism is correct answer. Yellow journalism. Next, find the odd one out from the following. 11 to 15 लॉजिकल रीजनिंग के बेसिस पे डॉक्टर हॉस्पिटल नर्स पेशेंट सो हॉस्पिटल इज करेक्ट आंसर ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर हॉस्पिटल इज नॉन लिविंग थिंग एंड डॉक्टर पेशेंट nurse are living beings. Next, abhava of a thing is known through anuplabdhi. Option A is correct answer. Abhava means non-existence and anuplabdhi means non-perception. So option A is correct answer. Abhava of a thing is known through anuplabdhi. Arthapati means presumption, upasthiti means presence, and uplabdhi means knowledge of presence or perception of presence, opposite to anuplabdhi. So option A is correct answer. Remember. Next, what are the missing letters in following series? PQR dash dash RS PRS dash dash SPQ dash. So correct sequence will be PQRS, then QRS, then PRS के बाद फिर से रिपीट होगा P, then Q, then R is missing S, PQ, then R. So SQ, PQ, R. Option C is correct answer. Missing letter. Next, if ideas related to brain, then money related to cash, bank, loan, investment. Option B is correct answer. Means how it is related? Ideas are related to brain. Ideas are stored in brain. Then money is stored in the bank. Option B is correct answer. Or kept in the bank. Next, what is the correct sequence of the five-member syllogism Avanayas in ન્યાય સિસ્ટમ? ન્યાય પદ્ધતિમાં પાંચ અવયવોની યોગ્ય ક્રમશઃ અનુસૂચિ કઈ છે? તો હેતુ, પ્રતિજ્ઞા, ઉપનયા, ઉદાહરણ કે નિગમન. તો કરેક્ટ સિક્વન્સ ઇઝ ઓપ્શન બી, પ્રતિજ્ઞા, proposition, હેતુ, reason, ઉદાહરણ, example, ઉપનયા, application, નિગમન means conclusion. તો ઓપ્શન બી is correct sequence. પ્રતિજ્ઞા, હેતુ, ઉદાહરણ, ઉપનય and નિગમન. Next, which of the following best defines descriptive research? Research focused solely on creating new theories, theoretical research. Investigation focused on presenting status of phenomena as they exist. Option B is correct answer. Without manipulation जो description देता है वो descriptional research है. Then study to prove scientific law under controlled situation is experimental research, and research designed to change the existing conditions is action research. So option B is correct answer. Next, an opinionaire-based study means opinion-based study, questionnaire-based study on social issues will have historical method, survey method, experimental or quantitative method. Option B is correct answer. Survey method. Opinion या questionnaire provide करते हैं. Next, what is an ethically appropriate method when referring to individual participants in research? List all their names with their responses. Use code language or anonymous identifiers. Ask participants to publish their own data. Replace name with the name of collectors. No. Option B is correct answer. Use code language or anonymous identifiers. Don't publish their names and all. So option A is also incorrect answer. Respondents का privacy होना चाहिए. Confidentiality means. Next, which of the following set has only qualitative measurement? Value attitude analogs,
capital investment, vision, mission, value, performance, profit, expenditure, investment, profit. These are the quantitative terms. So option A is correct answer. Next, what percentage of observations are broadly covered from 0 standard deviation to -3 SD of normal probability distribution curve? So 100% में entire cover होगा, 0% में होगा ही नहीं. 50% is correct answer. Then 30% it is standard normal probability curve. So option C is correct answer. So क्वेश्चन नंबर 16 to 20 रिसर्च एप्टीट्यूड के रिलेटेड था. अब हायर एजुकेशन के रिलेटेड 5 क्वेश्चंस है. Gujarat Public Universities Bill was passed in Gujarat Legislative Assembly in the year 23. Correct answer is option B. Next, the primary focus on the National Educational Policy 2020 is creating expensive education system, providing free education for all, transforming India into knowledge-based society and economy. Option C is correct answer. Or emphasizing traditional education is not. Next, name the parent or root organization for DTH Channel 7 Kautalya of Swayamprabha managed by CEC UGC New Delhi. Gujarat University is correct answer option A. Educational Multimedia Research Center, Ahmedabad. Correct answer is option A. Which university in India is offering the largest number of courses through distance model? Distance mode means private education. Mumbai University, University of Delhi, IGNOU or Baba Saheb Ambedkar Open University, Ahmedabad. Option C is correct answer. 1000 plus courses are provided by IGNOU on the distance mode. मुंबई यूनिवर्सिटी में 100 प्लस कोर्सेज और स्ट्रीम्स है. दिल्ली यूनिवर्सिटी 20 to 30 है. इग्नू 1000 प्लस एंड बाबा साहेब अम्बेडकर around 70 to 80. So option C is correct answer. Which of the following is a common entrance exam for admission to medical college in India? It is NEET. Option C is correct answer. JEE इंजीनियर्स के लिए, कैट MBA के लिए और गेट PG इन इंजीनियरिंग के लिए. तो option C is correct answer. National eligibility cum entrance test. Next question number 26. The data on sales of cellular phone rupees in thousand during 2017 to 22 years are 48, 40, 30, 25, 28, 40 respectively. The 2 years between which the rate of change of sale of cellular phones have been minimum. तो हमें identify करना है from 2017 to 2022 years. In which year, which 2 years the difference is the minimum. तो 48 और 40 total 8 difference, 40 और 30 10 difference, 30 और 25 5 difference, 25 and 28 3 difference और 28 40 12 difference. तो 25 28 वाला ये कौन सा ईयर होगा? 2017 18 19 2021. 2021 option D is correct answer. Difference between 2 years are minimum. Next, data interpretation. The number of candidates rupees in lakhs appearing in entrance examination of 5 different locations along with the ratio of passing and failing is given as follow. Location PQRST, number of candidates in lakhs and ratio of passing and failing is this. So what is the ratio of the number of candidates failing in exam from location S? That of those failing in the exam from location P. ओके, हमें आइडेंटिफाई करना है कि लोकेशन एस और पी का फेलियर का प्रोपोर्शन क्या है, नंबर क्या है. तो कैलकुलेशन करेंगे, पहले पास और फेल में डिवाइड कर लेंगे. ओके, सो लेट्स फर्स्ट डिवाइड एस टोटल 2,27,000 कैंडिडेट्स 1:3. तो 2,27,000 डिवाइडेड बाय 4, तो फेल कितने हो गए? 56,750. और हमें आइडेंटिफाई करना है पी लोकेशन का. टोटल 1,25,000 कैंडिडेट्स में 7:3 का रेशियो है. तो फेल वाले कितने? 1,25,000 डिवाइडेड बाय 10, दैट इज 12,500. तो प्रोपोर्शन क्या हो गया? 56,750 to 12,500.
डिवाइडेड बाय 12,500 करेंगे तो हमें प्रोपोर्शन मिलेगा 4.54। हमें प्रोपोर्शन किस में दिया है? ओके, तो हमें आइडेंटिफाई करना होगा, इनटू 50 करेंगे तो आंसर मिलेगा 227। दैट इज ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। 50 से मल्टीप्लाई करने पे आंसर आएगा, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। एस लोकेशन का फेल का प्रोपोर्शन और पास टी लोकेशन का फेल का प्रोपोर्शन इज 227:50। नेक्स्ट, the chance that Dr. A will diagnose a disease X correctly is 60%. The chance that a patient will die by his treatment after correct diagnosis is 40%. And the chance of death by wrong diagnosis is 70%. A patient of Dr. A who had disease X died. What is the probability that his disease was diagnosed correctly? तो सबसे पहले कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आइडेंटिफाई करना है। इसके लिए बेस थ्योरम का फॉर्मूला अप्लाई होगा। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी मीन्स व्हेन प्रायर इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। तो बेस थ्योरम का फॉर्मूला क्या बताता है कि अगर सिचुएशन अवेलेबल है, प्रपोर्शन अवेलेबल है, तो हमें इस पर्टिकुलर कंडीशन के साथ आइडेंटिफाई करने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। सिंपल टर्म में प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्ट डायग्नोसिस इज 40%, 60%। प्रोबेबिलिटी मीन्स चांसेस ऑफ करेक्ट डायग्नोसिस इज 60%, सेकेंड लाइन में दिया है। तो इसका मीनिंग हुआ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ रॉन्ग डायग्नोसिस इज 40%, remaining 40%. Okay, now probability of death with correct diagnosis कितना है? probability of death with correct diagnosis is 40%. इसका मीनिंग क्या हुआ कि जब करेक्ट डायग्नोसिस किया, वो 60% जो चांस है उसका 40% डेथ होने के चांसेस है। इवन आफ्टर करेक्ट डायग्नोसिस डेथ आर चांसेस ऑफ 40% ऑफ 60%। समझा? मतलब ओवरऑल 100% डायग्नोसिस करते हैं, उसमें से करेक्ट डायग्नोसिस के 60% चांस है, रॉन्ग डायग्नोसिस होने के 40% चांस है। पर करेक्ट डायग्नोसिस होने के बाद भी डेथ हो सकती है, तो वो 40% चांस है। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ डेथ विथ रॉन्ग डायग्नोसिस कितने परसेंट चांस है? 70% चांस है कि अगर रॉन्ग डायग्नोसिस किया तो डेथ कितनी हो सकती है? 70% चांस है। तो हमें आइडेंटिफाई क्या करना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्ट डायग्नोसिस एंड डेथ। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी बाय डी कितनी होगी वो हमें आइडेंटिफाई करना है। तो इसका फॉर्मूला आइडेंटिफाई करना है। क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ डी बाई सी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्ट डायग्नोसिस डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ डी बाई सी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्ट डायग्नोसिस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ डेथ बाय रॉन्ग डायग्नोसिस इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ रॉन्ग डायग्नोसिस। क्योंकि डेथ बाय रॉन्ग डायग्नोसिस कब होगा? जब डायग्नोसिस रॉन्ग होगा। तो हमें आइडेंटिफाई करना है कि डेथ बाय रॉन्ग डायग्नोसिस कितना परसेंटेज होगा ओवरऑल रॉन्ग डायग्नोसिस का। इसका मीनिंग है कि अगर रॉन्ग डायग्नोसिस 40% होता है तो उसमें से 70% डेथ हो सकती है। ओके, नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ डी बाई सी इज 40% ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ सी 60% डिवाइडेड बाई सेम जो न्यूमरेटर है उसको पहले डिनोमिनेटर में ले लेते हैं, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ डेथ by wrong diagnosis 70% of probability of wrong diagnosis, that is 40. So 60 into 40% 24 और 0.24 भी ले सकते हैं। 24 plus 70 into 40% 28. So 24 divided by 24 28 52, करेक्ट। इंटू 100 करेंगे तो हमें परसेंटेज में आंसर मिलेगा। तो 24 डिवाइडेड बाई
24 divided by 52 into 100. That is 46%. 46.15%. 46%. Option C is correct answer. 0.46. That is 46%. क्लियर? बेस थियरम का फॉर्मूला अप्लाई करना होगा और बेस थियरम का मैंने सेपरेट वीडियो भी अपलोड किया है, आप चेकआउट कर सकते हो. Next, the probability that a student is not a swimmer is 1/5. Out of 5 students, what is the probability that at least 4 are swimmers? तो टोटल 5 स्टूडेंट्स में से 1/5 इज अ नॉन स्विमर और बाकी के 4 स्विमर्स हो सकते हैं. उसकी प्रोबेबिलिटी आइडेंटिफाई करना है. तो जब दो आउटकम है, या तो स्विमर्स है या तो नॉन स्विमर है, तो हमें बाइनोमियल फॉलो करना होगा. तो उसका फॉर्मूला क्या है? एन चूज आर, जो कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है वो अप्लाई करना होगा. एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल. तो नॉन स्विमर की प्रोबेबिलिटी है 1/5, that is 20%, means 0.20. स्विमर्स होने की प्रोबेबिलिटी हो गई 4/5, that is 80%, 0.8. तो ये फॉर्मूला अप्लाई करना है जिसमें हम डिजिट डालेंगे. तो हमें पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 4 स्विमर्स. 4 स्विमर्स की प्रोबेबिलिटी कितनी है? मीन्स 5 चूज 4 इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई बाई 0.8 रेज टू 4 इंटू 0.2. 0.8 कहाँ से आया? ये है स्विमर होने की प्रोबेबिलिटी. Out of total 5 students, there is 80% chance that students are swimmer and 20% chance that students are not swimmer. और वो जो 80% चांस है वो है 4 स्टूडेंट्स होने की प्रोबेबिलिटी. तो 5 इंटू 0.8 इंटू इक्वल इक्वल इक्वल, ये मिला हमें 0.8 रेज टू 4, दैट इज 0.4096 इंटू 5 किया और उसका हाफ किया तो आंसर सेम ही मिलेगा. इंटू 5 इंटू 5 इंटू 0.2, दैट इज 0.496. सेम आंसर मिलेगा. अब हमें क्या आइडेंटिफाई करना है? आउट ऑफ 5 स्टूडेंट्स नॉन स्विमर्स होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? तो 5 चूज 5 1 मिलेगा. 1 इंटू 80% प्रोबेबिलिटी है कि वो स्विमर्स निकले और 5 पावर में होगा. तो इसका और एक 0.8 इंटू 1 2 3 4, 0.32768, ये प्रोबेबिलिटी है कि सारे के सारे स्विमर निकले. तो 0.8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0.4096 दोनों को ऐड करेंगे तो मिलेगा प्लस 0.32768 इक्वल्स टू 0.73% चांस होगा. 73, अराउंड 74%, that is 0.74. Option B is correct answer. Next, some tickets are numbered from 1 to 100 for a random draw. What is the probability that the number drawn is a multiple of 5, 3 or 5? तो इंक्लूजन एक्सक्लूजन करना होगा. आउट ऑफ टोटल 100 हमें 3 के सेट निकालने और आउट ऑफ 100 5 के सेट निकालने. फिर जो कॉमन है 100 में से 15, 3 और 5 का जो मल्टीप्लीकेशन होगा वो निकालना है. ये दोनों को ऐड करना है और इसे माइनस करना होगा. तो क्या आएगा? 100 डिवाइडेड बाई 3 करेंगे तो हमें पता चलेगा कि 33. हमें सिर्फ राउंड ऑफ लेना है, होल नंबर इंटीजर्स लेने हैं, डेसिमल्स नहीं लेने. तो ये होगा 33 काउंट. फिर 100 डिवाइडेड बाई 5 होगा 20 और 100 डिवाइडेड बाई 15
6 होगा, तो 33 प्लस 20 माइनस 6 करना है। 33 प्लस 20 53, 53 माइनस 6 47, तो 47% चांस है कि नंबर ड्रॉन इज अ मल्टीपल ऑफ 5, 3 और 5. तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी. Next, which of the following is not a state of memory level? So as we know, there are three levels of teaching: memory level, the lowest level, understanding level, and reflective level, the highest level. Retention, recall, recognition, and assimilation. Recall, and recognition is for memory level, and assimilation comes under understanding level. So option D is correct answer. Next, for teachers, it is important to consider the individual differences amongst the learners. This helps to classify the students in subgroups of different activities, guide learning and development, guide learning and develop students' cognitive process. Correct. Option B is correct. Ensure uniform teaching for all students, reduce need for assessment. No. Option B is most appropriate answer. For teachers, it is important to consider the individual differences among the learners to guide learning and develop the students' cognitive process. So B is correct answer. Next, which of the following is the most significant for students' learning? Student background, periodic academic achievement, active learning process, or availability of textbook? Option C is correct answer. What type of content is broadcast on Swayam Prabha channel? Weather and entertainment program, political debate program, educational program covering diverse field for 18 plus age group learners, and telecast of job opportunity to apply. Option C is again correct answer. Next, under choice-based credit system, the requirement for awarding degree is determined by number of credits earned by the students, number of years spent in the program, marks obtained in semester examination, or attendance internal assessment marks only. So option A is correct answer, number of credits earned by the students. Next, okay. So teaching aptitude वाला part complete हुआ. Next, people and environment से fly ash produced in thermal power plant is useful in road construction, wasteland development, agriculture as micronutrient, brick making. Correct. All of the above is correct. 1, 2, 3, 4. Option C is correct answer. Next, arrange the following themes of SDG according to their goal numbers in decreasing order. Decreasing order means highest number पहले आएगा. Life below water SDG 14, clean water sanitation SDG 6, life on land SDG 15, climate action SDG 13, affordable and clean energy SDG 7. So starting from 3, 1, 4, 5, 2. 3, 1, 4, 5, 2. Option A is correct answer. Next, given below are two statements. In light of above statements, choose the correct answer from the option given below. Statement 1. Cyclone developed in the region lying between Tropic of Capricorn and Cancer are called tropical cyclone. Correct. Hurricane Helen was large, catastrophic, and deadly tropical cyclone that caused widespread destruction and fatalities. Fatalities means death across the southeast United States in September 24. Both the statements are correct, and option 1 is correct answer. Next, how many states in India are identified as the highly vulnerable to climate change as per National Climate Vulnerability Assessment Report by the Department of Science Technology, Government of India 2024? So, Assam, Bihar, Arunachal Pradesh, West Bengal, Jharkhand, Mizoram, Chhattisgarh, and Odisha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Option D is correct answer. There are 8 highly vulnerable to climate change states in India.
तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, which of the following oxides of nitrogen is constituent of air quality index? AQI में कौन से पार्ट बनेगा ऑक्सीडेंट? नाइट्रोजन, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और डाइनाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड. तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर. इट इज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, NO2. सो पीपल एंड एनवायरमेंट वाला पार्ट कंप्लीट हुआ. अब स्टार्ट करेंगे मैथमेटिकल रीजनिंग. नेक्स्ट, if the first and second letter in the word communications were interchanged, also the third and fourth letters, the fifth and sixth letter, and so on, which letter would be the 10th letter counting from your right? इंटरचेंज करना है ना. COMMUNIC ATIONS. इंटरचेंज कर दिया हर दो लेटर्स को आपस में. तो राइट से 10th लेटर कौन सा होगा? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट, नाइन्थ, 10th. That is N. Option C is correct answer. Next, the angle A of triangle ABC is equal to the sum of two other angles. Angle ABC is equal to the sum of two other angles. Also, the ratio of angle B to C is 4:5. तो 4 + 5 करेंगे तो ये 90 होगा. That is 90 degree, 40 degree, 50 degree. Option A is correct answer. Next, find the missing number in the following series: 4, 8, 12, 24, 36, 72 and question mark. So 4 into 2, 8, and 4 into 3, 12. Correct? Then 12 into 2, 24, 12 into 3, 36. Done. Now 36 into 2, 72. So 36 into 3, 108. Option D is correct answer. Next, the monthly income of a person was 13,500 and his monthly expenditure was 9,000. Next year, his income increased by 14%, expense increased by 7%. The percentage of increase in his saving was dash. So, original actual income is 13,500. Actual expense is 9,000. तो इनकम माइनस एक्सपेंस सेविंग्स 4,500 होगी. नाउ न्यू इनकम नेक्स्ट ईयर 14% से बढ़ गया तो 13,500 प्लस 14%, 15,390 और 7% से उसका एक्सपेंस बढ़ गया. 9,000 प्लस 7%, 9,630 हो गया. तो उसकी सेविंग्स कितनी हो गई? -15,390. सेविंग्स हो गई 5,760. तो कितनी सेविंग्स बढ़ गई? तो 5,640 माइनस 4,500. तो डिफरेंस इज 1260 से बढ़ गई. ओरिजिनल इनकम है
4500 से डिवाइड करेंगे, इंटू 100 करके परसेंटेज आइडेंटिफाई करेंगे, क्योंकि हमें परसेंटेज में आंसर चाहिए। तो 12,260 डिवाइडेड बाय 4,500 ओरिजिनल 28%. Option A is correct answer. Next, find out the compound interest on 1,000 rupees at the rate of 10% per annum for 18 months when interest is compounded half yearly. So principal amount is 1,000 rupees, rate of interest is 10%, compounded half yearly for 18 months. So formula annuity A equals to कंपाउंड इंटरेस्ट इंक्लूड करके कितना मिलेगा वो आइडेंटिफाई करना है, उसका इंटरेस्ट प्रिंसिपल इंटू 1+r डिवाइडेड बाय 100 रेज टू n। अब नंबर ऑफ हाफ ईयर्स 3 है, तो n को डिवाइड करेंगे हाफ ईयर से, इसलिए ये नंबर बन जाएगा 3 हाफ ईयर्स। देन इससे भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा क्योंकि कंपाउंडेड हाफ ईयरली है। तो 1000 इंटू 1+r है 10%, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे और 3 हाफ ईयर से, तो 1000 इंटू 0.1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1, इसका पावर 3 है, तो 1 2 दो बार इक्वल किया 1.157625 इंटू 100, दैट इज 1157.625। तो डिफरेंस कितना है? 157.63। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। Compound interest का formula. Here we have completed mathematical reasoning. Let's start with last 5 questions. Reading comprehensive. Question number 46 to question number 50. Question number 46. What are the essential components of effective learning? Option B is correct answer. Curriculum, pedagogy, assessment and student report. Refer para 1, line 1 to 4. Next, question number 47. How do pedagogical practices influence students? Correct answer is option B. Influence learning experience and outcomes. Refer para 1, lines 6 to 8. From here to here. Next, question number 48. What type of autonomy will institutions and faculty have to promote creativity? Correct answer is option B. Autonomy, curriculum, pedagogy and assessment. Refer para 2, line 1 to 3. Then, what will the revised CBCS credit-based, choice-based credit system aim to achieve? Correct answer is option B. Encourage innovation. Refer para 3, line 1 to 3. And last question. What grading system will HEI, higher educational institutions, adopt for final certification? Correct answer is option C. Criterion based. Refer para 3, last 2 lines. So here we have completed gset November 2025 question paper for paper 1 set A. If you want this question paper to solve in Gujarati, then let me know in comment section. We'll try to complete whole syllabus and papers from 2023 to 2025 commerce management economics in Gujarati. Happy learning. Bye.